Hello, Assalamu alaikum. Today's topic is topic number 3 of chapter number 2, recruitment, selection, and training of employees. Okay, so the learning objectives for today are we'll talk about what recruitment is and how do we select employees, importance of training and methods of training, why reducing the size of the workforce might be necessary, and legal controls over employment issues and their impact on employers and employees. So starting off with the first thing, which is HR department, which is also known as human resource department. What are the activities, what are the functions of a human resource department? देखो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये एवरीथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स विच इज द लेबर फोर्स एम्प्लॉइज। ठीक है, अब क्या क्या वो चीजें देखते हैं, ओवरसी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स कि किसको कितना वेज देनी है, बोनसेस एटसेट्रा, इंश्योर बेटर कंपनी कल्चर यानी what is the environment, work environment like, work conditions कैसी हैं, recruit employees, monitor performance, performance of what, performance of whom, performance of the labor force, promotion, demotion, everything related to that. The trainings provided to the labor force is also a part of human resources activity. ठीक है, all right, recruitment जो है, that is the process of actively seeking out and finding out and hiring candidates for a specific position or job. यानी जब आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, that procedure process is known as recruitment. ठीक है, जॉब वैकेंसी आती है, वैकेंसी मींस इट्स अ पोजीशन दैट इज एम्प्टी, दैट इज येट टू बी फिल्ड, राइट? फिर आप उसका जॉब एनालिसिस करते हैं, विल टॉक अबाउट व्हाट जॉब एनालिसिस इज. देन यू अट्रैक्ट कैंडिडेट्स बाय एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल दैट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ व्हाट, ऑफ द वैकेंसी ऑफ द जॉब. फिर आप एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करते हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, एंड देन एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, राइट? सो मोटे मोटे दीज आर द स्टेप्स. Job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operation and responsibilities of a specific job. यानी कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, और विच इज ऑल्सो नोन एज पर्सन स्पेसिफिकेशन. जॉब एनालिसिस में फर्स्ट थिंग इज जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी वैकेंसी है, व्हाट आर द टास्क रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. उसमें जॉब टाइटल क्या होगा, लोकेशन, समरी, हु आर यू रिपोर्टिंग टू, वर्किंग कंडीशंस, what are the tasks, machines to use, hazards, etc. यानी everything related to a job जब वो आप एनालाइज करेंगे, that would be known as job description. On the other hand, दूसरी चीज है जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन. Now this has to do everything with the person who is applying for the job. उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, what training should be given or should he have already skills, responsibilities, यानी everything about the person will come under the category of job specification or person specification. ठीक है जी. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, डिफरेंस क्या है जी, इंटरनल सोर्सेज वर्सेस एक्सटर्नल सोर्सेज. इंटरनल का मतलब ये होगा कि व्हेन यू आर हायरिंग फ्रॉम विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही किसी बंदे को हायर कर रहे हैं. एक्सटर्नल सोर्सेज में यू आर हायरिंग अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन करंटली. ठीक है, यानी कोई ये बाहर का एप्लीकेंट होगा. बेसिस क्या है जी, यहाँ इंटरनल सोर्सेज में यूजली आप ये कहते हैं, अच्छा जी जो सीनियर बंदा होगा उसको प्रमोट किया जाएगा या उसको हायर किया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द जॉब इज. यहाँ पे जब एक्सटर्नल सोर्सेज की बात आती है, वहाँ पे बेसिस क्या हो जाती है, देन क्वालिटी, मेरिट, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बिफोर हायरिंग द राइट कैंडिडेट. अच्छा, इंटरनल इसलिए टाइम कम लेता है बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द पर्सन. ठीक है, इसका काम जानते हैं, इसकी परफॉर्मेंस जानते हैं, एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन. दैट्स वाई इट टेक्स लेस टाइम टू हायर, और ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पोस्ट इट एनीवेयर, बस इंटरनली हायर कर लेते हैं. यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि नाउ यू हैव टू गो ओवर ऑल द टेस्ट, इंटरव्यू, स्क्रीनिंग एटसेट्रा. ठीक है जी. सो व्हाट इज और द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूट. इंटरनल में चीपर एंड क्विकर टू रिक्रूट, एंड वी डिस्कस्ड व्हाई. पीपल ऑलरेडी फेमिलियर विद द बिजनेस, सो ना बिजनेस को ट्रेनिंग ज़्यादा देनी है, ना फिर द अदर वे अराउंड. इवन बिजनेस नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑलरेडी. ठीक है जी. प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन. प्रमोशन इज वन वे इन विच इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉसिबल है ना भाई. आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही प्रमोट कर रहे होते हैं. Knows the strengths and weaknesses of candidates, better selection, increase employee morale, adaptability, and cost effective. External recruitment में outside people bring in new ideas, यानी अगर आप बाहर का कोई बंदा लाएंगे, हो सकता है कि he is bringing or she is bringing good ideas in your business. Pool of workers from which to find the best candidate. अच्छा,
नाउ यू हैव मोर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, है ना। एक जॉब के लिए अगर हंड्रेड्स ऑफ पीपल अप्लाई करते हैं, उसमें से आप बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट हायर कर सकते हैं, विच विल इवेंचुअली बेनिफिट योर कंपनी. People have a wider range of experience, greater choice for selection, balanced HR mix, fairness होगी because you're not basically favoring anyone. Internal में तो there is a chance कि यार आप किसी favoritism कर लें, यहाँ पे वो तो इतना ज़्यादा possible नहीं है. And environment adaptability. डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिट्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेंट. जब आप इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास गिने चुने लोग होंगे टू सेलेक्ट फ्रॉम. नो न्यू आइडियाज, हो सकता है वही घिसे पिटे आइडियाज आ रहे हुए हैं. एक्सटर्नल में तो ये था कि यू कैन गेट मोर गुड आइडियाज और मे बी इनोवेटिव आइडियाज. मे कॉज रिसेंटमेंट अमंगस्ट कैंडिडेट्स. फॉर एग्जाम्पल जी, यार उसकी क्यों हो गई है, मेरी मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई. तो दिस माइट ऑल्सो कॉज जेलिसीज या हेट्रेड. Creates another vacancy which needs to be filled. Limited choice and nepotism. Again, this is what favoritism. Failed applicants become discontent. Again, the same point. जो इसकी नहीं हुई होगी, वो फिर हो सकता है या तो बेसिकली ही इज जेलस फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, या फिर ही इज डीमोटिवेटेड कि यार मेरी प्रमोशन नहीं हुई या मुझे क्यों नहीं हायर किया इन्होंने दोबारा. वेस्टिंग टाइम इंटरव्यूइंग अनकंसिडर्ड कैंडिडेट्स एंड इन ब्रीडिंग ऑफ स्टेटस को. अगेन, जिसकी लॉबी होगी उसी की पार्टी का कोई मेंबर आ जाएगा. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में ड्रॉबैक्स हैं. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर. पहले वो एडवर्टाइज करेंगे, फिर आप लोग अप्लाई करेंगे, हो सकता है उसमें इररिलेवेंट कैंडिडेट्स भी हों. ठीक है. रॉन्ग सिलेक्शन अगर हो गई, एंड सी अगर यहाँ पे रॉन्ग सिलेक्शन हो जाती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है. राइट. मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट, सिलेक्शन प्रोसेस मे नॉट बी इफेक्टिव, हाई कॉस्ट एंड अडेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम. हो सकता है यू एंड अप हायरिंग, एक दो महीने बाद आपने हायर किया है एंड द बंदा इज नॉट बीइंग एडजस्टेड, प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं कर पा रहा वो आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट में या वर्क कंडीशंस में. ठीक है. ये ड्रॉबैक्स हैं. अब सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनली आप ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकती हैं, डिमोशन, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को एक्सटेंशन दे सकते हैं, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स, डिसीज्ड एम्प्लॉयज. फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट में होता है कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, इफ समवन्स डैड पासेस अवे, तो वो उसकी जगह उसका सन, कंसिडरिंग कि उसने बैचलर्स किया इस तरह करके, उसको जगह उसको ले आते हैं. प्रीवियस एप्लीकेंट्स, प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ये सारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, यानी आप कैसे कैसे हायर कर सकते हैं. एक्सटर्नल में एडवर्टाइजमेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट. फॉर एग्जांपल जब आप बैचलर्स करेंगे यूड सी के ये करियर फेयर्स लगते हैं, उसमें कंपनीज आती हैं, दे टेक योर सीवीज एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन. प्लेसमेंट एजेंसीज, आउटसोर्सिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉय रेफरल्स, वॉक इन एंड राइट इन. वॉक इन का मतलब ये है जी, आप इंटरव्यूज हो रहे हैं, दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनीवन, तो आप बस इंटरव्यूज हो रहे हैं, आप जाएं इंटरव्यू दें एंड दैट्स इट. प्रोफेशनल एसोसिएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन. यहाँ पे इसका मतलब ये एक्सटर्नल में आप फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हायर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ द डिफरेंस बिटवीन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम. पार्ट टाइम कौन होते हैं? जो कम काम करते हैं, कम टाइम के लिए काम करते हैं, एंड दे डू अदर जॉब्स एज वेल. फुल टाइम का मतलब है फॉर एग्जांपल फुल 9 to 5 वाली जॉब, यानी आप फुल टाइम यू आर स्पेंडिंग एट द बिजनेस प्रेमिसेस. ठीक है. पार्ट टाइम के प्रोस क्या है जी? रिड्यूसेस कॉस्ट, यू हैव टू पे देम लेस क्योंकि वो टाइम भी कम लगा रहे हैं, सो इट सेव्स यू कॉस्ट. रिलीज वर्क प्लेस स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 9 to 5 एक जगह काम करता रहूंगा, स्ट्रेस मुझे ज्यादा होगा. अगर मैं 9 to 12 एक जगह काम करूंगा, देन दैट्स फाइन, आई एंजॉय मोर टाइम. फ्लेक्सिबिलिटी. बट व्हाट अबाउट द कॉन्स? लेस कमिटेड वर्कर्स, क्योंकि आई नो कि यार मेरी परमानेंट तो है नहीं, आई एम नॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो बस ठीक है आओ और टाइम पूरा कर जाओ. लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ द बिजनेस रन्स, उसकी निटिग्रिटीज क्या है मुझे नहीं पता होगा क्योंकि आई एम जस्ट देयर फॉर फ्यू आवर्स. इनकंसिस्टेंट वर्क, अगेन बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज नेसेसरी स्किल्स, तो फिर इनकंसिस्टेंसी होगी मेरे काम में, which will eventually harm the business. ठीक है. फुल टाइम में स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉय लॉयल्टी, बिकॉज दे नो कि यार मैं इसी बिजनेस का एम्प्लॉय हूँ, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी एंड हाई रेट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. कॉन्स क्या होंगे जी? ज्यादा एक्सपेंसिव होगा बिकॉज यू हैव टू पे देम मोर, क्योंकि वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. इंक्रीज वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंड हार्डर वर्क लाइफ बैलेंस. यहाँ पे यू हैव टू स्टे फॉर एग्जाम्पल 9 to 5, 9 to 6 पूरा टाइम करके ही आना होता है, unless and until there is an emergency. अच्छा, what is training then? Once you hire, फिर आपने obviously train भी करना है. Activity of learning or teaching the skills and knowledge needed for a particular job or activity. Induction training क्या होती है जी? Given to a new employee, introduction से निकला ये. Explaining the firm's activities, customs and procedures and introducing them to their fellow workers. यानी यहाँ पे आप बेसिकली कैंडिडेट को फेमिलियराइज करा रहे होते हैं फ्रॉम द प्रोसीजर, फ्रॉम द ऑपरेशंस. On the job training, on the other hand, based on the principles of learn by doing या learning by doing,
यानी ऑन द जॉब पे आप काम करने के साथ साथ सीख रहे होते हैं. द वर्कर्स learn the job while performing it within the actual work environment. And off the job training may occurs when employees are taken away from their workplace, place of work or workplace to be trained. यानी ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी जहां आपको जॉब पे नहीं तंग किया जाएगा, आपको स्पेशलाइज जगह पे लेके जाके प्रॉपर ट्रेनर्स होंगे एंड देन यू विल बी ट्रेन्ड देयर. सो 10 थिंग्स टू कवर इंडक्शन ट्रेनिंग. कंपनी हिस्ट्री आपको बताएंगे, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, रोल डिटेल्स, इंडस्ट्री इन्फो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, कंपनी वैल्यूज, यानी एवरीथिंग अबाउट द कंपनी दैट अ कैंडिडेट नीड्स टू नो. एटलीस्ट उसको इतना पता होना चाहिए कि जो बिजनेस में मैं काम कर रहा हूँ बेसिकली वो है क्या, ठीक है, उसकी डिटेल्स क्या है. देन कम्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब पे रहते हुए काम करते हुए सीख रहे हैं आप. व्हाट आर द मेथड्स? जी, मेंटर करना, मेंटर बाय समवन who is an existing employee of the firm, job rotation, JIT, job instruction training, understudy, apprenticeship and coaching. ये सारी चीज़ें आपको ऑन द जॉब होंगी. इसका फ़ायदा क्या होगा जी? जनरली मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि यू डोंट हैव टू हायर अ स्पेशलिस्ट ट्रेनर फॉर इट. आप कहते हैं काम से साथ साथ ही सीख लेगा कोई और, इसे कुलीग ही सिखा देगा. Employees are actually productive because they're also doing the work. ठीक है, opposite to learn while doing. Training alongside real colleagues, employees may be more confident training alongside their colleagues. ऐसा भी हो सकता है कि you're more confident and you learn more quickly than off the job training. Managers can easily assess and monitor progress over time, which makes it easy to identify problem, and then जब वो problem identify कर लेंगे फिर वो आपकी help out भी कर सकते हैं. ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं, क्वालिटी डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ ट्रेनर एंड टाइम अवेलेबल. ऐसा ना हो कि आपका जो ऑन द जॉब आपको जो ट्रेन कर रहा है उसको खुद इतना ना पता हो, ठीक है, या वो खुद नॉन सीरियस हो. बैड हैबिट्स माइट बी पास्ड ऑन. बैड हैबिट्स ऑफ whom? बैड हैबिट्स ऑफ द ट्रेनर. लर्निंग एनवायरनमेंट में नॉट बी कंड्यूसिव. हो सकता है एनवायरनमेंट हो ही ना लर्निंग के लिए, वो सिर्फ काम वाला एनवायरनमेंट हो, फिर यहाँ पे मसला आ जाएगा. पोटेंशियल डिसरप्शन टू प्रोडक्शन, क्योंकि देखो अगेन अगर आप दो चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ट्रेन भी हो रहे हैं, इसका मतलब है फुल प्रोडक्टिविटी नहीं अचीव होगी. Trainer may not be given sufficient time to train the employee effectively, and if a trainer has been brought in from outside the business, they may not be familiar with the equipment, और हो सकता है उसको बिजनेस प्रोसीजर्स का पता ही ना हो इन दैट केस. ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में अगेन यू हैव टू गो आउटसाइड द वर्क प्लेस, और ये आपके टाइम वर्क आवर्स से हट के कोई भी ट्रेनिंग होगी, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. सिमुलेशन, यानी आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, वेस्टिबल ट्रेनिंग, केस स्टडीज, रोल प्लेइंग, मैनेजमेंट गेम्स, लेक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का बेसिकली सोर्सेज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है. यानी दैट्स हाउ यू कैन लर्न थ्रू लेक्चर्स, सिमुलेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग एक्सेट्रा. ऑफ द जॉब के बेनिफिट्स क्या हैं जी? वाइड रेंज ऑफ स्किल्स और क्वालिफिकेशंस कैन बी ऑब्टेन, बिकॉज आप प्राइमरीली सिर्फ और सिर्फ ट्रेन होने जा रहे हैं. कैन लर्न फ्रॉम आउटसाइड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स. Employees can be more confident when starting job because now they have the proper skill set to do the job. Employees can focus on training and not be distracted, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई और काम नहीं करना, उन्हें सिर्फ ट्रेन होना है. Opportunity mixed with employees from other businesses can be a great support and news and source of new ideas. ड्रॉबैक्स क्या है जी? मोर एक्सपेंसिव है, आपको अकोमोडेशन इन केस अगर चाहिए हो, ट्रांसपोर्ट भी अरेंज करके देना है. लॉस्ट वर्किंग टाइम, पोटेंशियल आउटपुट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी यही अगर ट्रेनिंग ऑन द जॉब हो रही होती तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा होता, बट दैट्स लॉस्ट ओवर हियर. न्यू एम्प्लॉयज में स्टिल नीड सम इंडक्शन ट्रेनिंग. यस, ये वाली ट्रेनिंग स्किल सेट के लिए ठीक है, बट इंडक्शन ट्रेनिंग रिगार्डलेस आपको देनी है, जस्ट टू गेट हिम फेमिलियराइज विद द company. Employees now have new skills, qualifications, and may leave for better jobs. कभी कभी ऐसा भी होता है, if another job pays you well and you have learned the skills from this particular job, but आप हो सकता है move away कर जाए, तो आपकी मेहनत, कंपनी की मेहनत तो जाया. Employees need to be motivated to learn, and the cost involved make it difficult for smaller businesses to send their employees. ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जो होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये वही कर सकता है अफोर्ड जो who's earning good, यानी larger businesses. Acha, then comes the concept of workforce planning. Right cost, right time, right place, right skills, right people. Everything comes under workforce planning. Workforce आपकी labor force होती है. Establishing of the workforce needed by the business for the foreseeable future, for some time in future, in terms of the number and skills of employees required. यानी आपको किस कॉस्ट पे, किस टाइम पे, किस प्लेस पे, किस स्किल सेट के साथ कौन सा बंदा चाहिए. This is what workforce planning is. Then comes downsizing. Downsizing is make a company organization smaller by eliminating staff positions.
यानी इस केस में आप अपनी कंपनी का नंबर कम कर रहे होते हैं। रीजंस क्या हो सकते हैं जी? या तो फर्म्स मर्ज कर रही हैं, या टेक ओवर हो रहा है, एक्विजिशन हो रही है, तो समटाइम्स एम्प्लॉयज जो एक कंपनी के होते हैं दे माइट नॉट बी रिक्वायर्ड एनी मोर, तो वो उनको सेंड कर देते हैं। When company goes at लॉस हो रहा है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे वेजेस, तब वो कम कर सकते हैं। चेंजेस इन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक क्राइसिस, स्ट्रैटेजी चेंजेस एंड आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली आप अपना काम किसी और कंपनी के हवाले कर देते हैं, सो योर बेसिकली दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज नो लॉन्गर नीडेड एंड देयरफॉर वर्कफोर्स इज मेड रिडंडेंट। अब इसमें दो चीजें, दो तरीकों से आप डाउनसाइज कर सकते हैं, या डिसमिसल है या रिडंडेंसी है। डिसमिसल जो होता है वो बेसिकली वर्कर की अपनी कोई मिस्टेक होती है, ही इज नॉट सीरियस या ही इज नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो प्रोडक्टिव नहीं है एटसेट्रा। तो इफ द लेफ्ट पिक्चर बेसिकली डिपिक्ट्स व्हाट, डिसमिसल, क्योंकि वो लेबर की अपनी गलती है तो ही इज बीइंग किक्ड आउट। राइट वन इज रिडंडेंट या रिडंडेंसी, जहां पे रिडंडेंसी कहते हैं जब कंपनी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड यू, या बेसिकली आपकी मिस्टेक ना हो, वर्कर की मिस्टेक ना हो, कंपनी आपको या अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर देयर इज अ क्राइसिस, ठीक है, तो कंपनी आपको फिर रिडंडेंट वो इज्जत से आपको कहती है सर दैट देयर इज द डोर, यू कैन लीव नाउ, ठीक है। डिसमिसल में वेयर अ वर्कर इज टोल्ड टू लीव देयर जॉब बिकॉज देयर वर्क और बिहेवियर इज अनसैटिस्फैक्टरी, सो इट्स द फॉल्ट ऑफ द वर्कर। रिडंडेंसी में when the employee is no longer needed and so loses their work through not due to any fault of theirs, they may be given some money as compensation because worker का कसूर नहीं है ये, this is and not even the fault of company, but yes company को करना पड़ा ये काम, ठीक है जी। Then legal control over employment issues, there are lots of government laws that affect equal employment opportunities. These laws require businesses to treat their employees equally in the workplace and when being recruited and selected. यानी देर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, एज पे कोई छोटा है तो आप उसकी रैगिंग कह रहे हैं, जेंडर पे फॉर एग्जांपल अगर फीमेल इज डूइंग द सेम थिंग यू आर नॉट पेइंग हर एज मच एज द मेल, रिलीजन, रेस, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर डिस्क्रिमिनेशन और मे बी रेसिज्म, ठीक है। अच्छा, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। अब कैसे कैसे किया जा सकता है? एम्प्लॉयज आर प्रोटेक्टेड इन मेनी एरियाज इंक्लूडिंग अगेंस्ट अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। अगेन वही बात है जी, अगर फॉर एग्जांपल एक यू नो बेस्ड ऑन रिलीजन अगर देख लें कि यार फॉर एग्जांपल ही इज अ हिंदू सो इसको ट्रीट नहीं अच्छा करना एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So that's protection given to the workforce against unfair discrimination. Health and safety at work, क्या हाइजीन कंडीशंस प्रॉपर हैं, क्या सेफ्टी गियर है, इफ यू आर स्पेशली डीलिंग विद डेंजरस मशीनरी, सो आर यू गिविंग द प्रॉपर गियर और नॉट। तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल। अगर आपकी गलती नहीं है एंड दे आर स्टिल किकिंग यू आउट, तो फिर उसके अगेंस्ट भी डिसमिसल है। वेज प्रोटेक्शन, आर यू बीइंग पेड अ लीगल मिनिमम वेज और नॉट, क्या आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा, आपकी वेज तो नहीं काटी जा रही, is it being given on time or not, ठीक है। all of this employees are protected against these things, right? Now what action can be taken by the employees in case they are unsatisfied या उनकी demands नहीं पूरी हो रही, उनकी wages नहीं अच्छी मिल रही, that is known as industrial action. Overtime ban, वो ये कह सकते हैं कि यार we will not work overtime, बस हमारे जितने hours थे job contract में हम उतना ही करेंगे, this is what overtime ban is. Work to rule, अब देखो कंपनी, एवरी कंपनी हैज रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वर्क टू रूल बेसिकली वो इस तरह से करते हैं कि वो हर रूल को फॉलो करते हैं सो दैट वर्क थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। कुछ रूल्स होते हैं जो वैसे ही फॉर द सेक ऑफ रूल्स बने होते हैं, बट दे ट्राई टू फॉलो देम सो स्ट्रिक्टली। फॉर एग्जांपल इफ देयर एम्प्लॉयर इज स्ट्रिक्ट, ठीक है, और चाहता है कि यार वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, देन दे विल डू एवरीथिंग बाय द रूल्स, राइट। उससे क्या होगा, वो हर छोटी छोटी बात का भी रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे एंड विच वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। गो स्लो का मतलब ये होगा कि दे आर डूइंग देयर जॉब बट वो स्लो पेस पे काम कर रहे होंगे जस्ट टू अफेक्ट द बिजनेस समवॉट। सिट इन का मतलब ये है कि जी धरना जिसे हम कहते हैं, ऑक्यूपाई द बिल्डिंग, पब्लिसाइज द प्रोटेस्ट और बैठ के धरना देना। Picketing is stand outside lobbying workers to support, and picketing का मतलब ये हो गया you're not letting anyone inside the factory, the business premises, ठीक है। And strike is the last resort, जब कोई भी काम नहीं करता तो फिर स्ट्राइक क्या जी, विड्रॉ हो जाता है लेबर बाय रिफ्यूजिंग टू गो टू वर्क। इसमें फिर आप काम करना छोड़ देते हैं एंड की पीपल ओनली टू हिंडर और हॉल्ट प्रोडक्शन, यानी आप रोकना चाहते हैं इस चीज़ों को, ठीक है जी। अच्छा, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल क्या होता है जी, जहां पे एम्प्लॉयज की बातचीत, फॉर एग्जांपल क्रिमिनल कोर्ट कौन सा होता है, जहां पे क्राइम्स करने वालों की हियरिंग होती है, इसी तरह वर्कर्स की हियरिंग एंड एम्प्लॉयज की हियरिंग इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में होती है। कोर्ट डीलिंग मेनली विद एम्प्लॉयमेंट लॉ। हाउ डज इट वर्क, देखो जी,
वर्कर ने कहा यार फॉर एग्जांपल मुझे मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, या मुझे गलत बेसिस पे इन्होंने निकाल दिया, फिर डिसमिसल किया है, ही गोज टू द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल उसका एविडेंस देखती है, फिर एम्प्लॉयर का एविडेंस देखती है, एंड देन इट मेक्स अ डिसीजन जस्ट लाइक अ नॉर्मल कोर्ट. इफ द एम्प्लॉयर इज फाउंड टू बी एट फॉल्ट और गिल्टी, तो एम्प्लॉय को वो रीइंस्टेट करेंगे, उसको वापस अपनी जगह पे लेकर आएंगे, एंड फाइनेंशियल कंपनसेशन भी देंगे फॉर द लॉस्ट कंपनसेशन. अगर इट्स द अदर वे अराउंड तो फिर वर्कर इज लेट ऑफ. एम्प्लॉयर कंपनी फाइन बैड पब्लिसिटी, उस पर फाइन भी होगा, और ऑब्वियसली फिर ही विल नॉट बी मच मोर फेमस और मच मोर पॉजिटिवली थॉट ऑफ इन द सोसाइटी. अच्छा, सो इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल का वैसे अदर वर्ड्स क्या हो सकते हैं? हेयरिंग है, लॉ सूट, इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, केस, सम एवरीथिंग रिलेटेड टू लीगल एस्पेक्ट. ऑलराइट, सो दैट वाज इट गाइस. ठीक है, दिस वाज टॉपिक नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2. इंशाल्लाह कल जो होगा, यस, आई विल बी सेंडिंग यू टॉपिक नंबर 4 विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, एंड देन मंडे को आपका फिर एक टेस्ट रखा जाएगा. सो प्लीज डू वॉच द लेक्चर्स, एंड कल का भी लेक्चर है, आप पूछता मैंने आपसे देखा है कि नहीं, and inshallah I'll send you the next recording, next topic kal inshallah. ठीक है, so take care, Allah Hafiz.